एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों को सब स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एंड इन दिस चैप्टर, सो दिस इज आवर सेकंड क्लास। So this is atoms and molecules. Okay, so in the first class we learn the laws of chemical combination. तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो चार फोर लॉज है तो वो हमने पढ़ा था। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। तो व्हाट इज एटम? सो बेसिकली इफ वी वांट टू डिफाइन द एटम, so it is the smallest particle, of the elements, which may or may not have the independent existence. And it is no it is the smallest particle particles that take part in chemical reaction. ओके, तो ये क्या है हमारा जो जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो वो क्या होता है, जो दैट मे नॉट और मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सो हम बाद में ये देखेंगे, जैसा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन एटॉमिक तौर पे ये स्टेबल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल के तौर पर है, जैसा H2 है। लेकिन हम ऐसा देखेंगे, जो इनर्ट गैस एलिमेंट है हीलियम, so they are stable as a as a atomic element. Okay, so this is why it is may or may not have independent existence. Okay, so for this case it has a independent existence. For this case hydrogen, oxygen, kind of thing, so it does not have no independent existence. और क्या होता है, जो ये जो होता है एटॉम, जितना सारे जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो एटॉमिक लेवल पे ही होता है। एक्चुअली जो एटॉम, तो वही केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जानेंगे क्या है एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक एटॉमिक साइज, ठीक है। तो एटॉमिक साइज जनरली इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 0.1 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर जो है एक्चुअली 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो हमको पता है जो 10⁻⁻⁹ मीटर, तो ये बहुत ही स्मॉल है। तो ये जैसे नेकेड आई में ये हम लोग को दिखाई नहीं सकता। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे जो माइक्रोस्कोप, बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप अभी डिस्कवर हुआ है, इन्वेंशन हुआ है। तो उसका वजह से हम अभी जो एटॉमिक रेडियस है वो मेजर कर सकते हैं, और कुछ एलिमेंट के लिए हमारे पास डाटा भी है। जैसे हमारा जो कॉमन एलिमेंट है गोल्ड, गोल्ड का जो है, गोल्ड का एटॉमिक रेडियस, गोल्ड, तो ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड AU। विल सी व्हाई गोल्ड इज AU, हाउ वी रिप्रेजेंट। सो इसका जो रेडियस है वो है 0.144 नैनोमीटर। ओके, और जो हमारा जो सबसे सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो है हाइड्रोजन, तो उसका रेडियस और भी छोटा है, तो वो है 0.037 नैनोमीटर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, ये जो नैनोमीटर हम मेजर करते हैं, कभी कभी इसको और एक यूनिट है जो फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं, वो है एमस्ट्रॉन्ग। सो बेसिकली वन नो 10 एमस्ट्रॉन्ग, दैट इज नो वी यूज्ड टू राइट this is A, and in the its head we are having no 0, so this is the Armstrong
and 1 nanometer equal to 10 angstrom. So basically now if you want to, so it, for the easy measurement, so we can measure the radius of this element in angstrom also. Okay, so this is the size. So basically the atomic size in the order of a nanometer. So now we learn how to represent the atom. So basically the atomic symbol, atomic symbol. तो अभी अभी हमने जो बताया है, जो ऐसा गोल्ड ए यू, ओके, तो ये कैसे कैसे हम ये लिख सकते हैं, और जैसे हाइड्रोजन आर एच मैंने बताया, जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, सो ऐसे लिखते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक तरीका है, जैसे जो कन्वेंशन है, जनरल जो कन्वेंशन है, तो उसमें क्या होता है, तो उसका फर्स्ट इट स्टार्ट विद the English name. So basically if we are familiar with the hydrogen, so basically hydrogen. So if we want to write all these elements like this name, so it will be very difficult. तो इस तरीके से मतलब पूरा जो इसका जो नेम है, तो वो पूरा लिखना और कोई भी रिएक्शन है वो उसके रिप्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक सिंबल जो है, ये शॉर्ट नोट पे हम शॉर्ट नोटेशन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोटेशन कैसे होता है, जैसे फर्स्ट नो वी विल टेक द फर्स्ट नो लेटर ऑफ द फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो इसका जो नेम है हाइड्रोजन जैसा है, तो हाइड्रोजन से इसका जो फर्स्ट लेटर है, तो वो हम लेंगे और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है, ऐसा उसका जो सिंबलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो है H. Okay, so the same way oxygen for oxygen, so we won't write the oxygen full name, so basically we'll represent like this. Okay, so this is how. So first we'll see, so we'll take the first letter, and from the first letter we represent like this. Okay, similar way if we represent the carbon, okay, the carbon for carbon, so we represent C. Okay, so this is the symbol. So if you go through the periodic table, so then you can understand this is, you know, later it will be very easy for you. Okay, then there are some elements, so basically it's with the same initial order, the letter. So for example, like hydrogen, so if we are having the helium, okay, so we are having sorry, helium. So this is helium. Also, it start with the H. So for that case, what we do here. So basically, first we have to consider the first letter, and then we are having another letter to express the corresponding or the respective element. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हेलियम का जो सिंबल है वो है एच ई। ओके, तो ऐसे ही जो पहले क्या होते हैं, जो हम जो फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बाद कोई भी एक लेटर लेते हैं, तो उसी का मतलब वही द ऑल द एलिमेंट्स इट रिप्रेजेंट आइदर बाय वन no letter or the two letter. So for the two letter, the first will be the capital, and the next letter will be the the small letter. So it is not like that, so we have to take like a immediate letter. So we'll see, like for the carbon it is C. Again if we take a calcium, okay, so calcium again we cannot take no C, because then it will be no will be mixing with the carbon. So इसीलिए हम कैल्शियम के लिए क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम के लिए Ca रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज नाउ द कार्बन सी एंड कैल्शियम Ca। नाउ वी आर हैविंग सी विद द सी, हमारे पास और एक भी एलिमेंट है, जैसे बोलते हैं क्रोमियम। क्रोमियम, तो क्रोमियम में क्या है, तो इसमें जो होता है, तो क्रोमियम का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो वो हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ रूल्स है। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक नो इनिशियल वी हैव टू टेक विद द फर्स्ट लेटर, if not, so then we have to add another letter
and this is how we represent with the two letter, at least no two letter. So most of the elements, so we represent with the no the two letter, and the first will be the capital and the second will be the small. The same way we like a nitrogen for N and no sulfur for S, something like that. The most common, this is these are the elements we represent like this. ओके तो हमारे पास और भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स है, जैसे इंग्लिश नाम से नहीं आया है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक्चुअली दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ओके सो लैटिन वर्ड इसमें क्या है, जो पहले जो आएगा, जो हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड सो सभी को पता है गोल्ड कितना प्रीशियस है. तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड गोल्ड है, तो मैंने कैसे प्रेजेंट किया, ए यू से प्रेजेंट किया. तो ए यू किधर से आया है, एक्चुअली द ए यू इट स्टार्ट नॉट विद द गोल्ड. तो इसमें क्या है, एक्चुअली ये जो है गोल्ड, तो इसका जो लैटिन वर्ड है इसको बोलते हैं राम, around. So from there, so we got the AU term. Okay. तो जैसे ऐसे ऐसे है हमारा जो सोडियम, सोडियम तो सोडियम जो कॉमन है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन ए. सो इसमें क्या है, एस नहीं है. सो एस से शुरू होता है, लेकिन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों, तो इसका जो एक्चुअली लैटिन वर्ड से ये सोडियम आया है, इसको बोलते हैं नेट्रियम. सो नेट्रियम. Okay, so similarly this is potassium. So for potassium we represent K, and that came from the kalium. Okay, so like that we represent like a silver. These are the most frequently used. So silver we represent with Ag, Ag, and how we got Ag, this is called the argentum, argentum. ओके तो ऐसे ऐसे ही होता है, जैसे जैसे आयरन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं आयरन, तो उसके लिखते हैं एफी. एफी किधर से आता है, वो आता है फेरम. ओके एफी सो ऐसे होता है, जैसे टीन जैसा होता है, टीन हम ऐसे रिप्रेजेंट करता है, एसन से रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअली ये आता है वर्ड द स्टेनियम, स्टेनम, सॉरी. ऐसे हम यूज करते हैं. सो दीज आर द वे आई सॉ बेसिकली दीज आर द एग्जांपल. एंड फ्रीक्वेंटली दे इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको ये इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे सोडियम का लैटिन नेम, सोडियम कैसे आया है, सोडियम व्हाई सोडियम इज, सो बेसिकली Na. सो बेसिकली देन ये बोलना पड़ेगा, एक्चुअली द लैटिन वर्ड फ्रॉम नेट्रियम इट केम, that is why it is Na, or potassium, kalium, or the gold for aram, and things like that. Okay, so these are the few representation, and apart from that, the most of the things no we frequently use the English word. Okay, so now we'll talk about the atom. So basically now we learn what is the size of the atom, and the definition of atom. So now the how how do atom exist. क्योंकि हमने पहले जो बताया, जो इट मे और मे नॉट have existence in an independent phase. So basically how the most of the atoms, did it how did they exist in nature here. So basically it exists in two form, in the form of molecule, in the form of molecule molecule and second में क्या होता है, in the form of the ions. तो
पहले तो उसके बाद सो दिस इज हाउ द एटम्स प्रेजेंट इन नेचर। सो बेसिकली ये मॉलिक्यूल के तौर पे प्रेजेंट है और आयन के तौर पे प्रेजेंट है। सो नाउ हम अभी पढ़ेंगे जो एटॉमिक मास के बारे में। सो बिफोर गोइंग टू ऑल द डिटेल्स, सो बेसिकली नाउ वी लर्न अबाउट द एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास, तो एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, लेकिन कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं वही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले जो होता है, पहले ये स्टार्ट हुआ है, जो हाइड्रोजन का जो मास है वो यूनिट पकड़ के बाकी सब जो एलिमेंट है उन सभी का जो मास कैलकुलेट किया गया है। लेकिन अभी जो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है, जो IUPAC, इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने ये तय किया है जो हमको कैसे एटॉमिक जो मास है वो कैसे कैलकुलेट करना होगा। और हम ऐसे ही करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली विल सी हेयर क्या होता है, जो एटॉमिक कोई भी एटॉम और कोई भी एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो कार्बन का जो आइसोटोप है, इसका जो आइसोटोप है C12 आइसोटोप। एक्चुअली कार्बन का बहुत सारे जो आइसोटोप्स होता है, इसका C13 ऐसे होता है, कार्बन जैसा C614 12, सो C613, सो these are the isotopes C614, so these are no the most abundant isotope, सबसे जो उपलब्ध है तो वो है C12 आइसोटोप, तो इसी को रेफरेंस मानते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो इसका जो वेट है तो यही रेफरेंस मान के जो C12 जो होता है तो इसका एक जो वेट रेफरेंस मान के वो कैलकुलेट करते हैं। कैसे होता है, इसका जो रेफरेंस होता है तो ये C12 का जो मास होता है तो वो 12 AU और AMU, तो इसमें बोलते हैं इसको एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन का जो मास है वो 12 नो AMU ऐसे यूनिट, और दिस इज ए यूनिट आल्सो, इट इज कॉल्ड द यूनिट। सो बेसिकली कार्बन का मास है 12 AMU और 12 U। ओके, तो ये कांस्टेंट पकड़ के हमको बाकी सब रेफरेंस ऐसे कैलकुलेट करना है, जैसा एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। so atomic mass atomic mass of any element, so basically the mass of one atom of the element of the respective element, हम एलिमेंट जो कोई भी जो एलिमेंट का जो मास एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो उसका जो एटॉमिक वन एटम लेना है, उसका जो मास है वो डिवाइड करना है 1/12 ऑफ द मास ऑफ नो कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो ये कार्बन जो 12 जो आइसोटोप है उसका जो मास है 12 जो 12 AMU, और बेसिकली द 1/12 of this, so basically this will be the mass of any atom. So basically we can calculate the actual the mass of the absolute mass of the carbon, absolute mass of carbon C12, no, the atom is is 1, so basically 19924 into 10 to the power minus 23 ग्राम। तो इसका मतलब है, इसका ये जो है ये कार्बन जो 12 आइसोटोप है इसका जो मास है तो 1 AMU, सो 1 AMU, सो AMU एटॉमिक मास यूनिट, और U, तो ये क्या होता है
जो 19924 इंटू 10 to the power minus 23 डिवाइडेड बाई 12, तो ये जो आएगा लगभग ऐसा ही आएगा 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम। ठीक है, तो ये है 1 AMU और U, सो समटाइम्स इट इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय U। तो कोई भी हम अभी अभी जो कैलकुलेट कर सकते हैं जो ऐसे ही है, 112 का मतलब होता है जो इतना ग्राम, हम ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं, और AMU यूनिट और U ओनली U we can represent like this। ओके, तो अभी अभी क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ही हम कोई भी एलिमेंट और कोई भी एटम का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली क्या करना है, मास ऑफ द एटम, जो कोई भी एटम उसका जो मास कैलकुलेट करना है, एटम वन एटम का जो मास है, तो वो हमको मिल जाएगा। जैसे जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के जो आएगा उसमें रहता है जो तो वो जो है, तो उसमें 1/12 ऑफ द द मास ऑफ कार्बन एटम। तो ऐसे ही हमको एटॉमिक मास मिल जाएगा कोई भी एटम का और कोई भी एलिमेंट का। ठीक है, सो बेसिकली द कार्बन 12 आइसोटोप, दिस इज वी use as a reference। okay, so now we'll talk about the molecule। so basically molecule क्या है, तो molecule क्या है, when the two atoms, so at least two atom, so क्या बोलते हैं, so molecules are are formed by the combination of at least at least two elements। okay, at least two, so basically a molecule can form more than two elements। तो इसमें क्या होता है, जो एटम का जो प्रॉपर्टी रहता है, तो molecule, so basically which is the two atoms, so then again which which behaves as as a single entity, and capable of independent existence। जैसे हमने देखा है, तो वो जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली, बहुत सारे जो है एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो उतना उसका स्टेबिलिटी नहीं है, वो रिएक्टिव है। तो इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूल एज एटलीस्ट नो दो एटम, जैसे हम एग्जांपल लेंगे, ऐसे H, दो H मिला के हम बनते हैं H2, ऐसे ही नो, तो इसमें जैसे ऐसे रहते हैं, और H2 + O2 ऐसे मिलके बनता है H2O। तो इसमें क्या होता है, जब H2O जो बनता है ये है मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन जो बनता है ये भी मॉलिक्यूल है। लेकिन जब ये जो है हाइड्रोजन जो एटॉमिक लेवल पे है, तो और ये जो मॉलिक्यूल रहता है, तो इसका जो एंटिटी है, तो ये इंटरली डिफरेंस। ठीक है, और हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल मिला है, ये जो बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे है जो एक्चुअली इट कैन नो इंडिपेंडेंटली नो एग्जिस्ट। सो बेसिकली दे कैन, तो ये अकेला रह सकता है, मतलब एटम जैसे अकेला रह नहीं सकता। सो बेसिकली इट नीड्स टू डू केमिकल रिएक्शन और नो, सो बेसिकली इट नीड्स मोर देन वन एटम टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये सिंगल एंटिटी जैसे काम करते हैं। तो इसमें क्या है, दो वो है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी नहीं रहता है, इसमें एक अलग प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये अलग से रह सकते हैं। तो हम देखेंगे जो मॉलिक्यूल्स को हम भी डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल molecule molecules can be divided into two parts. So first one is like a molecules of elements. So molecules of elements
molecule of elements and the molecules of of compound. तो एलिमेंट्स क्या है जो एक्चुअली जो हमने जो अभी देखा है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट. सो सिर्फ वन एलिमेंट से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. तो वो कैसे होता है, वो जैसे दो दो बेसिकली दिस कैन बी लाइक ए मोनो एटोमिक monoatomic. So monoatomic like a helium. So this is only this molecule. Where it is made of only one molecule. Similarly, I'm not writing the atomic. So basically, this is a diatomic. डायटोमिक क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दो दो जो बनते हैं. तो ऐसे ट्राई एटोमिक होता है, जो ट्राई एटोमिक. ट्राइएटॉमिक कौन सा है, जैसे ओजोन है, O3, ये ट्राइएटॉमिक है. देन वी कैन नो टेट्रा टेट्रा एंड टेट्राएटॉमिक. so tetratomic क्या है, this is example of P4. so phosphorus, so this exists no with no 4. so then we can have penta and things like that. so then we can call the polyatomic. so we can go, so basically we can call the polyatomic. Okay, so polyatomic, if we have a more than four, so then we call this is a polyatomic. So the example is like the S8 is a common example, and then carbon polyatomic, like we'll learn in later. So in carbon part, so basically C16, this is also polyatomic. So here you can see the most famous. So this is called the Buckminster Fuller in C60. We are having 60 atom. So these are the few examples. Now we can similar way we can divide the molecules of compound. So monoatomic, diatomic, triatomic. So I'm not writing, but we can like this. So basically diatomic we can have like a CO, NO. So these are diatomic molecule, and the triatomic molecule we can have H2O. So this is example of the triatomic compound. So basically this is like a combination of two elements. Okay, so then we can have triatomic. This is like a this is the sorry, this is triatomic. The tetraatomic we can have, this is like NH3 PH3, something like this. So again we can have a polyatomic. So if we have a more than the four, so that will be polyatomic. And the tetraatomic like a we can have no sorry, if more than 4 we are having the polyatomic, so like a CH4 and then many organic compound. Okay, so those are the polyatomic compound. Now the we understands about the molecules and their category, and we can talk about the ions. Okay, so ions क्या है, तो ions no ions may be defined. So ions are basically uh, ions may be defined as as an atom or a group of atoms that carries the either positive or the negative charge. तो ये जो है एटम, जो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उसको आयन बोलते हैं. तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं द आयंस द कैरीज आयंस जो कैरीज पॉजिटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज उसको क्या बोलते हैं, कैटायन. और द आयंस व्हिच कैरीज नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं एन आयन. सॉरी, एनायन. तो इसमें जैसे एग्जांपल है ऐसे Na प्लस, H प्लस,
those are cation. Cl minus, Br minus, so those are anion. Again, if we talk about the group of anions, so basically when we are having OH minus, so that is group more than one atom, so this is OH minus. Then PO4 triple minus, so these are group of atoms, so basically we can also call this is a an ion. So these are the like a molecule, ion atoms exist as molecule that we saw, and also it can exist as a ion. Now we'll talk about the molecular compound and the ionic compound. So basically the molecular compound, molecular molecular compounds and ionic compounds. Okay, so ये क्या है molecular compound? So basically whatever the we got from the element, so basically that is the molecular compound. For example, like a H2O, H2O, HCl, okay, NH3, NH3, okay, CH4. So these are the molecular compound, and the ionic compound actually this is the we got from the ion. So this is mostly from the metal. Okay, so metal which electropositive in nature, so that will give the ion. So basically like a NaCl that we use in our daily life as a salt, तो उसमें क्या होता है, जो Na प्लस और Cl के ऐसे तरह पर रहता है, actually this is we got like this. Okay, so this is the difference between the molecular compound and ionic compound. तो इसमें क्या होता है, ionic compound में हम किसी भी इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये जो है ये आयन अलग हो जाएगा. एक्चुअली दिस इज लाइक ए वी आर हैविंग इन द सॉल्यूशन, दिस इज ए सोडियम आयन इन एक्वा सॉल्यूशन प्लस क्लोराइड आयन इन एक्वा सॉल्यूशन. तो ये वाटर से मतलब ये कन्फाइंड ऐसे ही रहेगा. तो ये जो सराउंडेड बाय sodium ion will be surrounded by the water molecule in the same like this. Okay, but for the molecular compound, so if we dissolve this, so actually so basically water, it will remain water, then the methane it will be. So basically ये क्या होगा, ऐसे जो एलिमेंट है तो वो एलिमेंट के तरफ पर ये ऐसा नहीं होगा जैसे कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा. तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन और नो बेसिकली व्हाटएवर नो द नो स्टेट विल टेक. सो if we take in a for example, if we take water, so in the gas form it will be in the, as a water, it will in the liquid form it will be water, in the solid form ice we know. So basically mm, ice, so that will be also in the water. Okay, but this is NaCl for ionic compound, so this will be like a salt form. This is example of NaCl. Then like a Na2SO4, so sodium carbonate, Na2CO3 frequently we use for the to for the washing purpose. So this is a like a detergent kind of old days we used to use like this. Nowadays we are having many new kind of detergent, but this is also frequently used for washing purpose. Okay, so these are the salts and these are the like molecular compounds. So basically you have to understand this. So जो मेटल आयन है, जैसे मोलिकुलर कंपाउंड ये नॉन मेटल से बनते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में जितना सारे जो राइट साइड में जो एलिमेंट रहेगा तो वो मोलिकुलर कंपाउंड बनाएंगे. तो हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड. तो उसमें क्या होता है ये पता चलता है कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा आयनिक बॉन्ड है. तो जो आयनिक बॉन्ड जो जो कंपाउंड में रहता है तो उसको आयनिक कंपाउंड बताया जाता है. ठीक है, तो अभी जैसे हमने एटॉम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल का भी और जो मास कैलकुलेट कर सकते हैं उसको बोलते हैं जो मॉलिक्यूलर 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 मास. तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी ऐसे कार्बन जो 12 आइसोटोप है उसको स्टैंडर्ड मान के कैलकुलेट करेंगे. सो बेसिकली द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of the substance. सो कोई भी सामान ले लो, उसका उसका सामान का एक मॉलिक्यूल ले लेना, तो उसके हिसाब से 1/12 1/12 ऑफ नो द
मास मास ऑफ C12 आइसोटोप। तो ये जो है 112 जो जो मास है, तो उसका हिसाब से जितना वो ज्यादा हैवी रहता है उसकी का उसका मास है। ठीक है, तो दिस इज वी कैन आल्सो इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस, सो बेसिकली द मास ऑफ मास ऑफ द of one molecule of substance divided by 1 AMU. So 1 AMU. Okay, so this is the unit, and how we can calculate the molecular mass. So basically, if we know uh, mm, uh, if we know the atomic mass, so from the atomic mass we can calculate the molecular mass. Molecular mass. So how to calculate? Basically, how to calculate? How to calculate? So how to calculate molecular mass? जैसे हमको पता है जो जैसे जो हाइड्रोजन का एक्चुअल जो मास है, वो एक्चुअली हाइड्रोजन जो एटम है उसको जो कार्बन का हिसाब से, जैसे कार्बन 12 आइसोटोप, सो 10078 AMU, तो ये हम वन ऐसे पकड़ते हैं। तो जो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, तो उसका मास 1+1, सो बेसिकली वी आर हैविंग 2 AMU, atomic mass unit, or also we can write U. Okay, ऐसे जैसे जो atomic mass, the molecular mass of O2, so basically atomic mass of oxygen is 16, so 16 plus 16, so that is 32 AMU. ओके, तो ऐसा जो है ये मॉलिक्यूल का मॉडल हम बना सकते हैं। जैसे ये है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमो एलिमेंट, सो बेसिकली द सेम एलिमेंट बट इफ यू हैव ए हेटेरो एलिमेंट और द अदर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल H2O कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, जो है दो, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, तो वो टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, उसका जो मास है 2 into 1 प्लस द एटॉमिक वेट ऑफ oxygen is 16 into 1, so this is your 18 AMU और यू। तो ये है जैसा वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मीथेन का कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कितना है, जो मीथेन का जो कार्बन है, ये एटॉमिक मास है और एटॉमिक वेट है 12। Okay, so into 1 plus no, we are having atomic mass of hydrogen is 1, so we are having 4, so इसमें क्या होता है 12 plus 4, so this is our 16. Similarly we can calculate like a CO2, तो उसमें क्या है 12 plus 2 into 16, so basically 32, so we are having 44. Okay, so this is how we can calculate the molecular mass of any compound, whether it is the elemental compound or it is a, the molecular, or it is a compound. So basically molecule of element और molecule of compound, so कोई भी है तो हम ऐसे इसका molecular weight calculate कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, और अगले क्लास में हम ऐसे इसी का जो केमिकल फार्मूला है, तो वो कैसे हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं, तो केमिकल फार्मूला, सो हम कैसे उसका वो यूज करते हैं, और कैसे लिखते हैं, लिखना होता है, तो वो हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।